So good evening. We'll start with exercise 8.4 जहाँ से हमारा एकदम रियल सब्स्टिट्यूशन चालू होता है, जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन को काम करेंगे. ठीक है, हम इसमें से कुछ जंप करके आएंगे और जहाँ जहाँ हमें कुछ नया लॉजिक लगता है इन्वॉल्व करना पड़ेगा वो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे. ठीक है, बट याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें हमारा बेसिक फार्मूला जो था, याद है हमने जो 6 फार्मूला दिया था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का अलजेब्रिक में 5 लाइक इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n एंड ऑल, ये सब हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. तो ये ऑब्वियसली हमको इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है. ओके, हमारा सब्स्टिट्यूशन ऐसा होगा इसमें कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट करके जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो हमारा किसी ना किसी एक फॉर्मेट पे आएगा जरूर. ओके, तो इन दैट केस हमें इसको कैसे सॉल्व करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर टेकिंग, हम कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं. y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x टू द पावर 4. सो देयरफॉर dy इज इक्वल्स टू 4 की 1 का डेरिवेटिव 0, it will be 4x cube dx. So dy by 4 is equals to x cube dx. अब ये जैसा ही ये हुआ, ये देखिए ये x cube and dx ये हमारा dy में कन्वर्ट हो जाएगा, या dy by 4 जो भी दिया हुआ है ये उसमें हमारा कन्वर्ट हो जाएगा. तो पूरे चीज को अगर हम ठीक से देखें तो it turns into y to the power 3 into dy by 4, जिसको हम लोग 1 by 4 टाइम्स y cube dy. So it is 1 by 4, y cube will be y to the power 4 by 4 plus c. So final answer is 1 by 16. What was y? 1 plus x to the power 4 whole to the power 4 plus c. That is the final answer. इनफैक्ट चेन रूल लगा के अगर आप इसको डेरिवेटिव भी करने जाओगे या इसको आप डिफरेंशिएट भी करोगे तो यू गेट द आंसर. ओके, सो दिस इज हाउ द सब्स्टिट्यूशन वर्क्स. सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कोई रूल नहीं है, इट्स जस्ट अ लॉजिक. इसको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 2 या 3 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करें. आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. ओके, these are a bit easy sums, फिर धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी पे जाते हैं. तो y is equals to, if I take 2x square plus x minus 7, so dy is equals to 4x plus 1 into dx. dy is equals to 4x plus 1 into dx. So whole integration. Okay, so the whole integration will change into dy by root y. So 1 by root y will be integration of y to the power minus 1 by 2 dy, which will be y to the power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1 plus c. So which is 2 root y plus c. And what is root y? So y is 2x square plus x minus 7 plus c. ये हमारा फाइनल आंसर है. ओके, ये पूरा बंद कर देना. ओके, okay, next question that we are going to do is question number 3 part 1. Question number 3 part 1. In this case, if I take, let's say if I were to take p is equals to 3x square plus 2x minus 5. So dt is equals to 6x plus 2 dx. So if we take 2 common, we get
dt by 2 is equals to 3x plus 1 into dx. So the whole integration changes into 1 by t cube dt by 2. So we are left with 1 by 2 t to the power minus 3 dt. So that's half t to the power minus 2 by minus 2. Minus 3 plus 1 is minus 2 by 2. So the final answer is minus 1 by 4 t square, obviously plus c plus c. So ultimately the final answer is minus 1 by 4 times of 3x square plus 2x minus 5 whole square plus c. That is the final answer. Okay, that's question number 3 ka part 1. Then I'll go for question number 4 part 1. अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया हो तो हमको बता दीजिएगा, बीच में प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा कि मेरा बाकी है ऑल. ओके, नेक्स्ट. So in this case again we have t is equals to a plus b e to the power x. So dt is equals to b e to the power x dx. So we get dt by b is equal to e to the power x dx. E to the power x dx. So the whole integration will change into integration t to the power 6 dt by b. That is 1 by b times of t to the power 6 dt. So it is 1 by b t to the power 7 by 7 plus c. So the final answer is 1 by 7b. What is t? That is a plus b e to the power x whole to the power 7 plus c. ये हमारा final answer. That's question number 4 का part. Next. Next question is question number 5 का part 2. So in this case, if I take z equals to x plus log x, so dz is equals to 1 plus 1 by x dx. So dz is x plus 1 by x dx. So we have x plus 1 by x into d. So we have 3. This one belongs to dz, so we have 3 z square dz, which is equals to z cube plus c. And what is z? That is x plus log x का whole cube plus c. आप लोग देख रहे थे, हम लोग का ऐसा सब्स्टिट्यूशन पकड़ना. अगेन दिस वन विल कम बाय प्रैक्टिस ओनली. तो पर हाँ, सब्स्टिट्यूशन मतलब यही है कि हमको ऐसा z पकड़ना है ताकि वो पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाए या उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट
ना इन दिस केस ये जो हम लोग ये भी ध्यान दें कि जिसको भी हम लोग z या t या y पकड़ रहे हैं हम लोग सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो उसका डेरिवेटिव दिमाग में करके देखिए कि इसमें हम लोग उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज सो वी हैव साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, हम उस क्वेश्चन को लिख देते हैं। सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। ये हमारा क्वेश्चन है। सो लेट्स सॉल्व। आई टेक y इज इक्वल्स टू sin inverse 2x. So we get dy is equals to 1 by root 1 minus 2x का whole square फिर 2x का 2 dx. So we get dy by 2 equals to 1 by root 1 minus 4x square dx. So the whole integration becomes, आप लोग देख रहे हो कि हमारा ये dx और ये वाला गायब हो जाएगा, तो we are left with y cube into dy by 2. The whole integration changes into this. So we have half into integration of y cube dy. Y to the power 4 by 4 plus c, so it is 1 by 8. What is y? That is sine inverse 2x to the power 4 plus c. कुछ इस तरीके का हमारा ये सोल्यूशन आएगा। रिमेंबर बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। Next question 7 का part 1 part 2 एक जैसा, I'll go for part 2. So we have cos cube ax plus b into sine of ax plus b into dx। कुछ इस तरीके का हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। So इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? We will have simply y is equals to cos of ax plus b. So dy is minus sine ax plus b into a into dx. So negative dy by a is sine of ax plus b into dx. So the whole calculation that we have is integration of y cube into dy by a. So negative 1 by a y cube dy, which is minus 1 by a y to the power 4 by 4 plus c, which is negative 1 by 4a y to the power 4. What is y to the power 4? Cos to the power 4 ax plus b plus c. That is equals to this. That was question number 7 का part 2. Okay. Then we have 8. 8 में दोनों करने की कोशिश करेंगे।
इस वाले क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि लेट t इक्वल्स टू sec x कर देते हैं। So dt is equals to sec x tan x dx. So the whole equation that we have will become sec square x sec x tan x dx. So sec x tan x dx हमारा dt हो जाएगा. So it becomes t square dt. So it will become t square dt. Now for t square, now it becomes t cube by 3 plus c. So we have sec cube x by 3 plus c. Same way, we have integration of cot cube x. So we have integration of cot cube x into cosec square x dx. So in this case हम लोग क्या करेंगे? We will take y is equals to cot x. So we get dy cot x का हो जाएगा minus cosec square x dx. So minus dy is equals to cosec square x dx. So the whole integration y cube minus dy minus integration of y cube dy. Y to the power 4 by 4 plus c. So it's negative 1 by 4. What is y? Y is cot to the power 4x plus c. That is the final answer that we will have. ये 8 का हमारा दोनों क्वेश्चन रहा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Can I get a thumbs up? अगर सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट, then tell me. I have almost 23 people on board. I have Anya Gupta, Aditya Kumar Oza, Angel, Bhavna, Janvi, Kiya, Maitri, Manvi, Nakul, Neha, Nikita Acharya, Paridhi Agarwal. Yes, somebody has raised hand about. तिलक मुखिया अभी ज्वाइन कर रहे हैं. I have प्राची, श्रेया शर्मा, श्रेया दीवान, सृष्टि. समझ में आ रहा है? हाँ? Next question will be, let's say question number 9 का part 1. It's a very easy question. थोड़ा सा basic sense अगर हम लोग लगाएंगे तो we know that 1 plus tan square x is sec square x dx. So we have y is equals to tan x. So dy is equals to sec square x dx. So the whole integration will change into root y dy.
So y to the power half, so that's half plus 1 by half plus 1 plus c, which is 2 upon 3 y to the power 3 by 2 plus c. And what was y? Y is nothing but tan of 3 by 2 upon x plus c. ये हमारा final answer होगा. This will be the final answer that we get. Okay. That was question number 9 का part 1. Next question. Next question will be 10 का part 1, part 2. कोई सा भी कर लेते हैं. I'll go for 10 का part 2. 9 का part 2 में 1 plus cos x को y पकड़ लिएगा. You will get your answer. So we have tan x by root cos x. So how we are going to solve this one? So tan x को हम लोग लिखेंगे. tan x को लिखेंगे हम लोग sin x by cos x into cos x whole to the power half dx. So we get sin x by cos x. The powers are added 3 by 2 dx. So we are going to take t is equals to cos x. थोड़ा directly अगर करता हूँ तो minus dt is equals to sin x dx. I hope this one is clear. बीच का एक स्टेप मैंने स्किप किया है. cos x का माइनस साइन x होता है, फिर माइनस इधर हटाते हम लोग इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं. So the whole integration now changes into minus dt by t to the power 3 by 2. So it will be what? It will be simply with a negative sign integration t to the power minus 3 by 2 dt with a negative sign minus 3 by 2 plus 1 by minus 3 by 2 plus 1 plus c. So the final answer that we get is minus half. So 2 times of t to the power minus half plus c, which is 2 by, what is t? T was cos x, so that is root cos x plus c. Negative half is 1 by root t. Negative half is 1 by root t. ये calculation देख लीजिए. So I wrote the answer straight away. So this is the final answer that we have. ये arrows अगर पसंद नहीं है okay. Wait a minute. Okay. एक मिनट दीजिएगा जरा. Next. Next question, we will go for question number 11 part 2. 12 में देखा हमने जैसे शेड करके रखा है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा.
मैं दिखा दूंगा आप लोग को। फिलहाल हम तुरंत पार्ट 2 करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये। So what we are going to take, we will take y is equals to x minus cos x. Y is equals to x minus cos x. अभी भी कौन ज्वाइन कर रहा है? युवराज शर्मा। So dy is 1 plus sin x dx. So dy is equals to 1 plus sin x dx. So the whole integration changes into dy by root y. हम उसको थोड़ा देसी तरीके से करें, थोड़ा सा देसी तरीके से करें तो रूट वाई हम ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वी नो रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1 by 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1 by 2 रूट एक्स। तो हम 1 by 2 रूट वाई का इंटीग्रेशन स्ट्रेट अवे 2 रूट वाई कर देते हैं, है ना। सो दिस इज द आंसर दैट वी गेट। So what was y? Y is 2 times of root x minus cos x plus c. Yes, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? यस श्रेया चौधरी बोलिए। सर एक बार ये वाला फिर से समझा दीजिए ना, 2 वाला। 2 वाला छोड़ दीजिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट एक्स होता है। हाँ, तो बस वही चीज क्यों मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लिया। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या कि किसी चीज का डेरिवेटिव भी करके आया होगा, तो 1 by 2 रूट वाई मतलब रूट वाई का ही डेरिवेटिव होगा, तो इंटीग्रेशन भी रूट वाई ही होना चाहिए ना। हाँ सर। उस तरह, और नहीं तो इसको y टू द पावर माइनस हाफ dy ले लीजिए, है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, y टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, जो कि 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई, वाई का वैल्यू x माइनस कॉस x प्लस। तो आप कोई सा भी मेथड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। देखिए मैंने जिसको हाईलाइट जिस तरह से किया है, तो उस चीज को वाई पकड़ लेने से ऊपर वाले का काम तमाम हो जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अब हम स्ट्रेट में 14 में जाना पसंद करेंगे, तो फटाफट नोट कर लीजिए। अगर बुक में लिखा है तो बुक में लिख देख लीजिए, और उसको फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। गो विद क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बाकी सब क्वेश्चंस इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भले हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4 है, ठीक है, हम tan टू द पावर 6 आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। आई विल गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 6x dx, ठीक है। अगर 6x कर सकते तो 4x भी कर सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने का स्टाइल है, कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। और रिमेंबर ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब इसके ऊपर इनफैक्ट, हाँ, दोनों मान के ऑड हो या इवन हो, अगर tan के ऊपर पावर है तो रूल यही है। क्या है रूल? इसमें से एक tan स्क्वायर x को बाहर निकालना है, तो ये tan टू द पावर 4x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx, कुछ इस तरीके का होगा। तो इस tan स्क्वायर x को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो tan स्क्वायर x हमने बाहर निकाला है उसको हम लोग
sec square x minus 1 dx. Tan to the power 4x, it will be sec square x minus 1 dx. तो ये हमारा दो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा. ओके, पहला इंटीग्रेशन जो आएगा हमारे पास tan to the power 4x into sec square x dx minus integration of tan to the power 4x dx. Okay, if I name them as I1 and I2, I1 minus I2, ठीक है. तो मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा. ठीक है. So we have integration of tan to the power 4x into sec square x dx. Okay, ये I1. पहले हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं. इसके लिए क्या होगा, I take t is equals to tan x dt is equals to sec square x dx. So the whole integration becomes t to the power 4 dt, that is t to the power 5 by 5 plus c, that is equals to tan to the power 5x by 5 plus c. ये हो गया I1. Okay, now I'll go for I2. I2 is integration of tan to the power 4x dx. So the whole thing becomes tan square x into tan square x dx. So after having tan square x, this tan square x is sec square x minus 1 dx. We have sec square x minus 1 dx. So the whole integration we have is tan square x into sec square x dx minus integration of tan square x dx. In order to solve this tan square x again, I can use the same substitution. Okay, so this becomes integration of t square dt minus integration of tan square x को लिखेंगे sec square x minus 1 dx. So what is t square? That will be t cube by 3. Sec square x का हो जाएगा tan x minus x plus c. So what is t cube? Tan cube x by 3 minus tan x plus x. हम इसको c1 c2 लिख देते हैं माइनस c2 प्लस c2. हम यहाँ पे इसको c1 लिख देंगे. तो हमें I1 का वैल्यू मिल गया और हमें I2 का वैल्यू मिल गया. सो व्हाट इज I1 ये नोट कर लीजिए. तो फाइनली हमारे पास I1 क्या आ जाएगा. दिस वन विल बी tan to the power 5x by 5 माइनस ये हो जाएगा tan cube x by 3 माइनस tan x प्लस x. हमारे पास आ जाएगा प्लस c1 प्लस c2. हाँ ये ना. So the final answer would be tan to the power 5x by 5 minus tan cube x by 3 plus tan x minus x plus c. This is the final answer. इस क्वेश्चन को करने में हमारे पास tan to the power 4x भी है.
Yes, somebody raised hand. Yes, Shreya, बोलो. हाँ श्रेया जी बोलिए. हेलो, आवाज नहीं आ रही है श्रेया. हाँ विधि बोलो. सर इसमें इसको ऐसे करने की जगह अभी तो हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सिंस हम लोग पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिए, इसको हम लोग tan x को सीधा y लेके कर सकते हैं. tan x को y लोगी तो क्या हो जाएगा? तो dy इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ. फिर सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग 1+y² लिख लेंगे. ओके. तो dx dy बाई 1+y² हो गया. तो हाँ. होल इंटीग्रेशन y⁴/1+y² हो जाएगा. ऐसा क्या? आई डोंट थिंक सो. y to the हाँ power सर. y to the power 6 by 1 to the power 4 होगा. अरे मतलब आई थिंक अगर हम tan⁴x को करें. समझ. अच्छा, tan to the power 4x को करोगी तो y to the power 4 by y square plus 1 होगा. हाँ. हाँ तो हाँ फिर वो हो सकता है. वो कर सकते हैं हम लोग. स्मार्ट ओके. आंसर कर सकते हैं. ओके यस सर, श्रेया थैंक कुछ यू. बोल रही थी. हाँ श्रेया कुछ बोल रही थी, आपने हैंड रेज किया था. नहीं चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. कुछ नहीं बोलना श्रेया को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17. मैंने जो चीज़ को हाईलाइट किया है ये डिनोमिनेटर में, आप इसको कर लीजिए. कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए. आई विल मूव स्ट्रेट अवे टू क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 2. मैक्सिमम केसेस में आपको डेरिवेटिव आना चाहिए और ये चीज़ हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 2. बहुत ही फेमस सम है ये. ठीक है. हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है. सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से e टू द पावर x कॉमन लीजिए तो ये कुछ इस तरीके का होगा. डिवाइडेड बाई e टू द पावर x लीजिए तो ये e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x ds. ये कैंसिल हो गया. सो वी हैव होल इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x ds. ना इसके बाद हम लोग y ले लेंगे. y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिनोमिनेटर. तो dy हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx. So the whole question will change into integration of dy by y, जिसका फाइनल आंसर आएगा log mod y plus c, which is log mod e to the power x e to the power minus x plus c. That is the final answer that we have. That's question number 19 का part 2. We will go for question number 20 part 1. सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? We have integration of 1 by e to the power minus x को 1 by e to the power x dx लिख सकते हैं, जो कि सॉल्व करके e to the power x by e to the power x plus 1 dx. So now y is equals to e to the power x plus 1. So dy is equals to e to the power x dx. So the whole integration changes into dy by y, which is
log mod y plus c, which is log e to the power x plus 1 plus c. That's question number 20 का part 1. Next 20 का part 1. We'll go for question number 21 part 1. So we have integration 1 minus cot x by 1 plus cot x. इसको क्या कीजिए, cot x को cos x by sin x करके एलसीएम लीजिए. तो इसको आप लोग साइन कॉस में जैसे ही कन्वर्ट कीजिएगा, सो द होल थिंग चेंजेस इनटू, मैं जानबूझ के डायरेक्टली कर रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx. So we have t. So we have t, which is sin x plus cos x. So dt is equals to cos x minus sin x dx. So minus dt, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, so that's sin x minus cos x dx. So the whole integration will change into minus dt by t, which will be minus integration of dt by t, which is minus log t plus c, which is minus log sin x plus cos x plus c. That's question number 21 का part 1. 22 का part 21 का part 2 में ऊपर जो cos 2x है, इसका फॉर्मूला पे बैठाइएगा. देखिएगा एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, वो इस फॉर्मेट में ही आ जाएगा. ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे का एक फैक्टर देखिएगा कैंसिल हो जाएगा जब ए माइनस बी ए प्लस बी कीजिएगा. आपके पास यही क्वेश्चन ही बचेगा. ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 2. अब आते हैं थोड़ा और तगड़ा कैलकुलेशंस पे आते हैं. अब इसमें हम देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे we start with question number 3 का part 1 and part 2. So we have question number 3 का part 1 and part 2. So पहला क्वेश्चन, हमको एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन पकड़ना है ताकि मेरा किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर आ जाए. तो पहला वाला अगर देखिए, अगर हम t इज इक्वल्स टू cos x लेते हैं तो माइनस dt इज इक्वल्स टू sin x dx. मैं जानबूझ के डायरेक्टली किया हूँ,
तो वी हैव ये sin x और dx हमारा गायब हो जाएगा. So the whole question becomes e to the power t minus dt. इसको भी थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करते, माइनस e to the power t plus c, which is minus e to the power cos x plus c. ये हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग. यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप हम इसको ऐसे लिख रहे e to the power x by 1 plus e to the power x into e to the power x dx. So we have t is equals to e to the power x plus 1. dt is equals to e to the power x dx. So the whole integration e to the power x को t minus 1 by t dt. तो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 1 by t dt. What is 1? That is t minus log t plus c. What is t? T is e to the power x plus 1 minus log mod e to the power x plus 1 plus c. Remember ये प्लस 1 यहाँ पे आ गया है, इसको लास्ट में हटाना ही पड़ेगा. Plus c dash is 1 plus c. This is the final answer that we all have. Okay. इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहेगी, बट अगेन वो सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे वी हैव दिस वन. इसमें z इक्वल्स टू cos x लेंगे, तो dz विल बी minus sin x dx. So therefore minus dz is equals to sin x dx. So we get sin z minus dz. So minus integration of sin z dz. Sin z का इंटीग्रेशन is minus cos z plus c. वही cos x का sin x होता है, इंटीग्रेशन. So we get plus cos. What was z? Z is cos x. So it is cos of cos x plus c. ये हमारा कैलकुलेशन हुआ. That's question number 4 का part 1. I'll go for question number 6 part 2. So we have cosec square log x by x dx. So we have cosec square log x by x dx. So I'll take z equals to log x. dz is 1 by x dx. So we get integration of cosec squared z dz. Cosec squared z किसका होता है? minus cot z plus c. Minus cot, what is z? Log x plus. That is the final answer that we have.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2. तो इसमें समझ में आ रहा है कि इसको हमें z पकड़ना है. z इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x भी पकड़ सकते हैं, सिर्फ tan इनवर्स x भी पकड़ सकते हैं. मैं tan इनवर्स x पकड़ता हूँ. dz इज 1 by 1 plus x square dx. So the whole integration changes into sin 2z dz. sin 2z पर जाएगा cos 2z. z के साथ 2 है तो whole divided by 2. So that's minus 1 by 2 cos of 2z. That is 2 tan inverse x plus c. That's minus half cos of 2 tan inverse x plus c. नेक्स्ट. सर इसको आगे सॉल्व करना जरूरी नहीं है. नहीं, वो करने का मन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. बट क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं ना. इनिशियल क्वेश्चन में अगर चाहता तो सॉल्व कर देता. कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स. ओके ओके. नेक्स्ट 9 का पार्ट 2. So if I take y is equals to x e to the power x, so dy x को रखा, फिर e to the power x को रखा, x को रखा, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x and x का डेरिवेटिव 1 dx. So dy is equals to e to the power x plus 1 dx. So the whole integration changes into 1 by cot square y dy, and 1 by cot square y is tan square y dy. Now this tan square y will be integration of sec square y minus 1 dy. So sec square y is tan y minus y plus c. So what is tan y? Tan of x e to the power x minus x e to the power x plus c. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वाला करता हूँ.
we have integration of sine cube into cos to the power 4x. We have integration of sine cube into cos to the power 4x. याद रखिएगा कि जब भी साइन एंड कॉस और एक के ऊपर ऑड पावर है और एक के ऊपर इवन, आई रिपीट, एक के ऊपर ऑड एंड एक के ऊपर इवन, तो जिस फंक्शन के ऊपर इवन पावर है हम उसको y पकड़ेंगे. जैसे यहाँ पे cos x के ऊपर है तो हम y पकड़ेंगे as cos x. तो dy is equals to minus sin x dx. So that's negative dy, which is equals to sin x dx. So the whole integration will change into sin square x cos to the power 4x into sin x dx. इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस cos square x cos to the power 4x into sin x dx. So the whole integration is 1 minus y square y to the power 4 minus dy. So we have integration of, ये माइनस को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ, इस माइनस को अगर मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, so this becomes y square minus 1 y to the power 4 dy. Okay, better मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. Okay, so we get integration of y to the power 6 minus y to the power 4 dy. That will be y to the power 7 by 7 y to the power 5 by 5 plus c. So what is y? That is cos to the power 7x by 7 minus cos to the power 5x by 5 plus c. ये हमारा फाइनल आंसर है. That is sin cube x into cos to the power 4x dx. Okay. चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे.